हेलो गाइस, दिस इज उमेश, दिस इज अनुकृति, दिस इज आशु। और अब हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं ईवा ज़ुबैक की वीडियो पे जो है व्हाट वेस्टर्न मीडिया वोंट टेल यू अबाउट इस्लामाबाद। ओके। और हम लोग तो खैर तब भी बहुत जानते हैं, इनके लिए ये नई है तो हमने कहा इनको बता दें। काहे उसको परेशान कर रहा है भाई? अरे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पाकिस्तान से। अच्छा। Hi guys, I'm Ava. Over the last few weeks I've been traveling all around Pakistan, but I've been spending most of my time in Islamabad. Now, before I came to Pakistan, I kind of imagined Islamabad to be kind of like sandy colored, with a lot of sand, with a lot of animals walking down the streets and not much going on otherwise. Basically, I kind of believe the same image that most people out in the West believe Islamabad to be. But of course, having spent time here, I realized just how wrong I was. So today, in this vlog, I want to show you my Islamabad. The Islamabad that I know and that I have come to really like. So yeah, let me take you on a tour of my Islamabad. That was nice. Let's go. Chalo. Before we actually begin, I want to take you out on a coffee with me because it's morning and I have not had my fix of caffeine yet, which is very bad. I cannot function without it. So I'll take you to one of my favorite coffee spots in town. Dog lover. Yeah. Dog lover. Say hello to the camera. Oh, and this is Husky. Big puppy. He's not an actual husky. That's just what we call him. He's also excited. Oh, do you like, huh? I love these guys. This is actually one of my favorite parts of today, is getting in the car and grabbing my little coffee run. So let's go. I just want to preface this by saying that Islamabad is really surprising. And I think the thing that surprises people the most when they first arrive in Islamabad is just how green it is everywhere. I mean, there's trees, there's hedges, there's plants. It's extremely lush in that way, and it's actually one of my favorite things about the city. It feels like you're living in a village or the countryside and not the city itself. Right, we're just about to arrive. Find ourselves a parking spot. I'm not very good at this. This part of town is called Kosa Market and is this tiny cute little oasis in the middle of F6 or F7 in Islamabad. And most of the people that I know here in the city, it's pretty much their favorite hangout spot, and also mine. But we're here to get coffee and not wax lyrical about Kosa Market, so let's go and do that. भूख तो नहीं लगी? ना। Yeah, I'm a high functioning individual, but only with coffee. Cheers. Actually, I need to go to the shop very quickly here at Kosa, so let me just take you guys along and we'll be on our way very soon. Of course, most places in Pakistan are not like this, but in this vlog I want to show you just how western it can get, and that's why I'm taking you to the most western shop in town. So today at this very western shop we are looking for more coffee. Yes, because I am such a coffee fiend. So what do we have here? Starbucks. There's a lot of coffee here, ladies and gents. Actually, probably more than Tesco's back home in London. In fact, I shamefully admit that I don't recognize most of these American products. Anyway, armed with my fair trade coffee, I had to keep going. Because this next place I'm just about to show you is really cool and hides a key to the history of Islamabad too. This is Sadpur village, one of the most historic and probably Instagrammable places in all of Islamabad. And there's a couple of places in here that I really want to show you. First of all, the little museum here is where you can come to learn about the history of Islamabad. Just in case you can't make it though, let me give you a rundown. Super quick lesson in the history of Islamabad. Basically, this city doesn't have a history quite as rich and centuries old as that of Lahore or Multan. Islamabad didn't actually exist about a century ago.
Following the partition between India and Pakistan, Pakistan was looking to have a new capital that was a bit more central than Karachi, the previous one. So they picked a piece of land in the middle of the country. They hired Greek architects and urban planners, and they decided to build a city, the new capital, called Islamabad, coming from Islam, which is of course the dominant faith here, Abad, and Abad, which kind of means city, I think in Persian. So in the 60s, this beautiful capital was created pretty much from scratch, and here we are. Now, for a culture vulture like me, the newness of Islamabad means that I don't really get my history fix here. But as with everything, you can find it if you know where to look. Beautiful. But that's not all. Another thing I love about Sadpur village is that it's very diverse, at least historically. So this here is a Sikh temple, and that over there is a Hindu temple, one of the very few remaining in Pakistan. If you're an Islamite, then you probably think that Sadpur is a bit touristy, probably cute, but touristy. Traditional. As a tourist, I'm pretty sure that you will absolutely love it. So yeah, that's Sadpur. Kind of for me, the last remaining historical part of the city. As for the rest, well, this is where the really western part of the vlog begins. And I want to show you all of this because this is the side of Islamabad that most people in the West don't realize exists. Let me show you. What I'm about to share with you now was actually one of my biggest sources of anxiety before coming here longer term. Basically, you know, I'm a European girl and I like my European food, and from the kind of image of Pakistan and Islamabad that was sold to me by Western media, I assumed that, you know, I would be sitting here bathing in nihari and chicken karai and samosas. Well, it's actually turned out to be one of my biggest sources of surprise and delight. And here's why. For example, it turns out that Islamabad has a European bakery that's ran by a Polish baker. Honestly, most of these can compete with what you get in Europe. I swear. No exaggeration. There's even a Belgian restaurant. And an English tea house serving scones, and a Hardee's serving burgers, and a Domino's serving, well, anyway, you get the gist. All of the big food brands from the West. McDonald's guy? And for the wizards out there, there's even a Harry Potter cafe. So it turns out that Islamabad has all these Western and American brands that you probably won't even see in most European capitals. So that really caught me by surprise. You know, I just had completely not seen it coming. And actually most of my Pakistani friends complained that in Islamabad there isn't enough choice of authentic Pakistani sort of desi food. But I think you can find a pretty good cup of chai if you know where to look. Or if you can handle it, Kashmiri chai and rasmalai, which is a ridiculously sweet desi dessert. Please don't judge me for making really irresponsible food choices and stuffing myself with sweets. It's just how I am. So you know, Islamabad is a pretty modern new city, so of course it doesn't have the same culinary traditions that Karachi or Lahore might have. But, you know, I don't think it's that bad. Because if you want this sort of desi touch, नवाज शरीफ का पोस्टर लगा हुआ you है can पीछे. also find क्या? it. नवाज शरीफ है? All the time with things like food shopping. For example, when I go to little tiny stores to get my fruit, just like this. I used to think it was super annoying to have to drive halfway across town just to get some fruit from a shop, where before I would just go downstairs to my local supermarket and get it from there in London. But actually I realized then that nothing compares to the personal attention that you get while shopping here. And you know, the great thing about shopping for fruit and vegetables in Pakistan is that it is mostly hyper-seasonal. So anything that you get, like pomegranates, which are currently in season, is going to be fresh and sweet and absolutely lovely. And actually that's something that I don't miss about back home in Europe at all. You know, all that processed food. I mean, I think I prefer it here. Have you ever seen a pomegranate this red? Anyway, as soon as I stop obsessing over this pomegranate, let me show you something else. Hands down, the best thing about Islamabad is the weather and the nature.
It's easily the greenest capital city I have ever been to in my life. And that means that every morning when I wake up and I go out onto my balcony, Wow. I get to see this. अभी उसने कुछ दिखाया ही नहीं Those है hills, they are रियल में और technically गजब called the Margalas, but actually they are the foothills of the Himalayas, which means that if you live in Islamabad, then technically you get to Himalayas. see the Himalayas every day. I guess that's a fact, right? But you can get even closer to the Margala hills, actually. You know, you could hike up on one of the many trails here in Islamabad, or like you can take the easy option and drive all the way So up greenery, man. there. Having seen so much of Pakistan, I of course realized that many cities Steering here left में था ना? have a ये देखो। problem with pollution, and they have very limited green spaces. But Islamabad is not like that. Islamabad enjoys all of this pristine nature that really surrounds it from all इसीलिए रोड चूज भी बनाई ऐसी है। जगह की And गई है this is कि probably नेचुरल ब्यूटी इसलिए वो the चूज most भी इसी टाइप beautiful की area है in the city. I mean, just look at these vistas. Isn't it pure magic? So that's it, guys. That's my version of Islamabad. Thank you so much for watching this vlog, and if you've enjoyed it, it would mean the world to me if you subscribe to my YouTube channel or any of my other social media channels listed in the description Bye-bye. box. But thank you again, and I'll see you next Wanna time. see some bloopers. The best thing about Islamabad it's that it's yeah, wasn't particularly but Islamabad What is was that? ऐसा होता है, ये आज ही हम लोग के साथ हुआ था ऐसा होता है। ये मस्त है। ऐसे ये चीज़ यार बहुत जज करते हैं हम लोग फॉरेन लोग कि गोरे लोग कि उनको लगता है कि हम लोग एकदम गांव में रहने वाले लोग हैं। मतलब पाकिस्तान के साथ मतलब क्या इंडिया के साथ भी यही चीज़ें लोग करते हाँ, हैं ये कि जो पाकिस्तान अब जो इंडिया उनके लिए सब एक ही है, वो भाई थोड़ा अनार वाली चीज़ की हाँ। पैरेट देखा है आज तक? आपने क्यों भी देखा, मैं- हम इतना ही खाते हैं। मेरे बगल वाले घर में पेड़ था इससे ज्यादा रेड हो पता है गया। भाई मैं ताज़े खा सकता था तोड़ के। तो वही मतलब कि उन लोगों को लगता है कि हम लोग को अगर अमेरिका कुछ प्रोवाइड ना करे तो हम लोग तो जी नहीं सकते हैं। मतलब वेस्टर्नर्स को ये लगता है कि सब लोग तो हम ही इन लोगों को खिलाते पिलाते हैं, हम लोग इतना नहीं, ऐसा एड नहीं देते है। हैं। इस मामले में ऐसा नहीं नहीं होगा। इन लोग को लगता है ना तरह से कि अब और वो उनके क्या है कि mentality का level ऐसा बन गया है कि यूके वगैरह में इतनी वो फार्मिंग तो होती नहीं है तो ये लोग इम्पोर्ट करते हैं। तो सीधी सी बात, ये लोग वो सारा जो मटेरियल आता है वो हमारे यहाँ किस सीजन में हुआ होगा, बल्कि हम ही लोग इन लोग को इम्पोर्ट करके देते हैं। पाकिस्तान तो एप्पल का सबसे बड़ा सोर्स है, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी बड़ा सोर्स है। तो ये सारी चीज़ें तो उन लोग को लगता है कि हम लोग दे रहे हैं लेकिन दे हम लोग रहे होते हैं। तो वही, और ऊपर से क्या कहते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा भाई, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। मतलब पिज्ज़ा एट डोमिनोज को आए हुए 15 साल हो चुके हैं। और ऐसा कौन होगा जो सोचता होगा कि इस्लामाबाद में ये सब नहीं होगा? वही, Obviously, मतलब वो capital capital city है। है, मतलब ये capital सब तो है। नॉर्मल था। वही, ये सब चीजें बल्कि वो बहुत कॉमन चीजें थी उससे। हाँ। बल्कि मेरे ख्याल से जो उसमें एक हैरी पॉटर वाला दिखाया गया है ना, उस टाइप की चीजें बहुत होंगी। डोमिनोज तो बहुत आम बात आम बात है, मतलब डोमिनोज ये तो पिज्जा हर जगह मिल जाती नॉर्मल है। यार। हाँ, ये अब तो बहुत- छोटे टाउन्स में भी उन्होंने सब अपने वो अबे हर जगह तो यूनिवर्सिटी के सामने खोल लेते हैं, इनकी यूनिवर्सिटी के सामने भी होगा क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स के आने जाने की जगह होती है तो वो लोग ऐसी जगह चूज करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही खोल लेंगे उन्होंने। वही सब जहाँ पे उसी वो के आसपास की तो carpenter जगह है जहाँ पे बच्चे इकट्ठा हो या फिर यूथ लेकिन इकट्ठा हो ये जाओ। चीज देखने में अच्छा लगता है। नॉर्मली जो वीडियोस देखते हैं ना, इस्लामाबाद के ऊपर है मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, वो ड्रोन से मैविक प्रो से एक शॉट लिया हुआ ऊपर से दिखाते हैं, उससे ज्यादा बेटर ये वीडियोस होती हैं कि आप घूम रहे हैं, आप वहाँ की लोकेलिटी दिखा रहे हैं, वहाँ के लोग ऐसा दिखा लगता है रहे कि हैं। अगर मैं चल रहा होता इस जगह तो मुझे कैसा फील होता। हाँ, ड्रोन same से वो वही- एक रियल वाली फीलिंग नहीं आती ना, क्योंकि तुमको पता होता है कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ और ये व्यू मुझे जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे नहीं लेकिन मिलेगा, लास्ट के क्योंकि मैं नीचे हूँ। 10-20 सेकंड में मुझे लगा कि वो कहाँ था ड्रोन, जब वो बाहर के शॉट्स दिखा रहे हैं। शॉट्स दिखाते समय जरूरी तब होता मुझे है। लगा कहाँ है भाई, एक बार थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। लेकिन उसका भी उन्होंने आसान कर लिया ना, वो पहाड़ पे चढ़ के हाँ, सीधे पहाड़ view पे चढ़ दिखा के दिया उन्होंने कि पूरा ये दिखा है, दिया। तो वो भी बेटर था। लेकिन एक जैसे इरफान जी ने जो इरफान भाई सबके अपने में ड्रोन ये लेके हो जाता चलते है कि हैं। तुम जब पर्सनली वहां पे होते हो तो तुमको वही फील आएगा जो उस बंदे ने तुमको दिखाया, हाँ। ना कि जो ड्रोन से दिखाया, क्योंकि ड्रोन और मुझे ज्यादातर यही चीजें पसंद भी आती हैं। जैसे इरफान भाई का भी यही काम है, सब कुछ दिखाते हैं कि चीज जो लोकेलिटी से क्या है, कैसे लोग हैं वहाँ पे, क्या है वहाँ फेमस, क्या है, ये सब चीजें बताते हैं तो अच्छा लगता इरफान है। भाई का सार्काज़म जीत लेता है। हाँ, खैर इरफान वैसे यहाँ पे भाई ईवा जुबैर की बात हो रही थी। हाँ। तो वैसे ये बात उन्होंने बहुत सारी सही बोली कि, और मैं इनसे बुरा नहीं मान रहा इनका, मैं बस एक बात नहीं। बता रहा हूँ कि कैसे वेस्टर्नर्स यही चीज़ सोचते हैं जो उन्होंने खुद बोली, और ये सही है। और इनकी वीडियो बनाना भी अच्छा है कि कम से कम लोगों को मालूम पड़ता है, क्योंकि हम लोग की वीडियो नहीं देखोगे लेकिन इनकी वीडियो देखोगे तो इस समय तुमको मालूम पाकिस्तान पड़ेगा का कि काफी अच्छा चेहरा है ये ईवा जुबैर। वही, हाँ ये तो बताया था कि टूरिज्म काफी- में भी शायद इनका tourism काफी में हाथ चल रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्या कहते हैं इनको प्रमोट कर रही है। तो
काफ़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि आप टूरिज्म बढ़ाओगे, लोग आएंगे तभी तो जानेंगे ना कि असलियत क्या है, क्योंकि हम लोग जो को दूर से तो यही नेगेटिविटी लगता बनी है हुई है, चाहे कहीं भी हो, इंडिया के लिए हो या फिर इंडिया की तरफ से हो, जैसा भी बनी है, ये सब यहीं कि से मीडिया हटेगा। कभी सही चीज़ नहीं दिखाता, वेस्टर्न मीडिया खासकर, वेस्टर्न मीडिया वेस्ट से बाहर ही नहीं सही निकलता चीजें है। मेरे ख्याल से हमेशा ब्लॉगर्स ही बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये नहीं होता है कि वहाँ कौन से देख रहा ट्रैवल है। कर हाँ, चुके वो होते रियल हैं। में होते हैं ना, वो रियल में होते हैं, वो चीजें रियल जो उनके दिखा साथ हो रही है वही दिखाएंगे, जो चीज़ नहीं हो रही है वो कहाँ से दिखा देंगे। उन्हें डर नहीं लगेगा कि शॉर्टकट करना है क्योंकि अच्छा नहीं था। वही, उनको पता है ना क्या ब्यूटी है उसकी। ओवरऑल मजा आया। और इस्लामाबाद इनके लिए पहली बार था। ये जैसे 4 बार घूम चुके हैं। अरे तो कम से कम हम लोग ने यार कितनी बार क्या सुन देख चुके लिया, हैं। पिज़्ज़ा देख लिया था दूसरी क्या बार। वो मस्जिद देखी है मैंने। हाँ मस्जिद, बस वही, उसके अलावा कुछ नहीं देखा वो दूसरा। क्या बहुत सारी चीजें जैसे देखी हैं। जैसे वहाँ पे मॉल दिखाया गया था, वो देखा था। अब यार मुझे नाम थोड़े ना पता है, जो नाम बता दूंगा दिल्ली की सड़कें थोड़े ना बता दूंगा, नहीं कनॉट प्लेस थी वो, अब इतना थोड़े ना याद रहता है, लेकिन हाँ मुझे जगह पहचान जहाँ लेता हूँ रहते थोड़ी हो वहाँ बहुत की की। सड़कें बता तो बहुत बड़ी बात है। पूछो, दिल्ली की सड़कें पूछो। बता, अरे नहीं चल। हाँ बस हो गया। चलिए हम लोग का रिएक्शन यहीं तक था। थैंक यू, पीस।